आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इनके व्लॉग्स या वीडियोस जो भी बोले मैं देखती रहती हूँ। और वीडियो का टाइटल है 8 days in real India और ये चैनल है नैस डेली। हाँ बिल्कुल, नैस डेली। और मुझे बहुत अच्छा लगता है नैस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को देखने का। बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। अभी हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का विजन लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। 8 days in real India. I have just arrived to India! ऐसे सोचता है ना? A country you might think is poor, but is actually rich. Rich with people. There are 1.3 billion of them. With culture, they have more than 1 million gods. And so many religions, even cricket is considered one. Rich with symbolism. So many dances for so many occasions and festivals. With food, flavors and color. India is rich, and for the next 20 days, my goal is to become as Indian as possible. So I'm turning vegetarian like many of them. This is my last piece of meat. I'm dressing up with more colors, and I'm trying my shot at their religion, cricket, unsuccessfully so. If in the next 20 days I can capture 1% of India's magic, then I'll be rich just like them. Hey, I hope you enjoyed this video. My name is Tony and I helped edit the video. We have 7 more amazing videos about India coming your way. But first, let me tell you a secret. And please, don't tell Nas. Editing takes hours and sometimes I get bored. So I play games, and this game sponsored the whole video. It's called Raid Shadow Legends. This RPG game has amazing graphics that will teleport you into a world of fantasy, and you can play completely for free. Raid has 16 different factions to choose from: orcs, dwarves, and many more. What I love about this game is that it allows for so many different kinds of play styles. You can play risky and go all offense, or play it safe and use defense champions. My mains are usually the high elves. They have some of the strongest and smartest characters around. Take a look at Ethos. He's a legendary champion that can attack all of his enemies at once with a giant blow. Destroy the enemy. Also, look at the graphics and details on his shield. This is insane. There's also online tournaments, local and global, so that you can battle with your friends and win amazing rewards. Wanna play? Click on the special link in the video description to download Raid to your mobile phone or PC to get 100k silver, 50 gems, 10 mystery shards, and 1 champion for free. Slasher. You will find extra rewards here in your inbox for the next 30 days only. Okay, my break is over. I gotta get back to editing. Enjoy the beauty of India. Married like an Indian, okay. Hi! One of the best parts of Indian culture is an Indian wedding. So today I decided to fake marry my actual girlfriend in an Indian wedding. Here's how our Indian wedding went. The day before, we got the henna, the jewelry, and the fancy clothes, and invited all of our Indian friends. On wedding day, I, the groom, arrived on a beautiful horse, surrounded by good-looking friends and lots of fireworks and music. And then I waited for my bride to arrive. She did arrive on a boat, then was carried by 4 men to meet her new husband. Together, we performed Hindu rituals to unofficially become husband and wife. And from that point on, our Indian wedding began. With amazing food, dance, and music. It's true, our wedding was not real, but the richness of Indian culture, weddings, and people are as real as they get. Not married like an Indian. Yesterday, Alina and I had a wonderful day pretending to get married to show you the beauty of Indian weddings. But underneath all of this lies the bitter truth. People
People like her and I are not supposed to get married. We have different religions, different age, skin color, and income. In India, we would fall in 2 different castes. And in the caste system, you're only supposed to marry the ones who are like you in terms of religion or social status. If they're not, then you're in trouble with your parents or society. It almost feels like society expects me to marry her parents, religion, money, or career, and not her. As if your loved one's personality or humanity doesn't matter. This is not just India, it's all around the world, even where we come from. Reality hurts. For every marriage that takes place, remember, there are tens of others that don't. That's 1 minute. See you tomorrow. Okay. Eat like an Indian. Vegetarian. I've always wanted to become a vegetarian, but in countries like Brazil, Philippines, and Nigeria, it's very difficult to be one. They just love to eat meat. In India, it's easier than ever to be a vegetarian. Entire menus and restaurants are dedicated to vegetarian food. Meat is replaced with cottage cheese, and it tastes just as good, if not better. Even McDonald's has no beef hamburgers. This is made of vegetables. For actual vegetarians, it's like heaven on earth. All of this because in Hinduism, a cow and its meat are considered sacred. That's why cows roam the streets for free and everyone respects them. Sure, you will find meat in India, but Indian food has managed to be exceptionally good without depending on meat. That's why in India, I'm becoming a vegetarian. So like an Indian. Okay. What you see behind me is real fire eating human corpses because I've just arrived to the city of Varanasi where people come to die. It's the holiest city in Hinduism. It lies on the banks of the Ganges River where millions wash their sins away by bathing in its water. And when you enter that holy river, it's like a whole new world. It will make you pure again. And if you die near Ganges, you will attain the moksha, the eternal liberation. That's why at the end of their lives, people come to die here. At Varanasi, you will find daily rituals to pray for the river god. Here, you'll find daily cremation of bodies. You'll even find extremist agoris who eat the dead corpses and wear their bones. Varanasi is a spiritual powerhouse. It's one of the most raw, human, chaotic places I've seen, yet I found it to be the most peaceful one yet. That's 1 minute. See you tomorrow. Study like an Indian. बहुत मुश्किल है. Hi, I have just arrived to an engineering school in India where 1.4 million students apply every year. Yay! But only 10,000 of them get in. That's an admission rate worse than Harvard and Stanford. It's the IIT engineering school in India, a country where millions aspire to become engineers. Because in India, people are smart. Ancient Indians invented the digit 0 and could predict planet position. Modern Indians, they could solve a Rubik's Cube 3 times by the time you finish watching this video. They could run companies like Google and Microsoft because the CEOs are both Indian. Inside the dark alleyways in India, you'll find beautiful technology offices where people are trying to code the next Amazon or Google. With 1.5 million engineers graduating every year, it's only a matter of time until the next Mark Zuckerberg is Indian. That's 1 minute. See you tomorrow. I love it. Thought like an Indian. When you think of a slum like the one behind me, you think of poverty, danger, and unemployment. That's what many people think when they see the 3rd largest slum in the world, Dharavi in Mumbai, India. From above, it's where 1 million people live in tiny houses. But from below, this is much more than a slum. It's a place that generates $650 million every year. It's where I saw a huge recycling business, pottery business, leather, and garment business. This product was made in Dharavi, not Milan, not New York, or Paris. Here, I struggled to find someone who was not working. Even inside houses, women were working. And those that were not, I found them cleaning. Because even with dirty roads and no toilets, houses are clean inside. Dharavi is an economic powerhouse filled with huge businesses, engineers, artists, and hard workers. It just so happens to be called a slum. That's 1 minute. See you tomorrow.
Okay. Namaste! It's my last day in India. And in the past few days, I have tried to become as Indian as possible. I dipped my body in their holy river, the Ganga. I ate, like many of them, vegetarian food. I visited their pink city, Jaipur, spiritual city, Varanasi, and their slum city, Darab. And I got arrested by their police for droning. I played their sport of cricket, helped in cleaning their parks, celebrated their Deepavali festival, learned from their smartest, and hung out with their richest. Heck, I even got married like many of them. But as much as I tried to become Indian, I realized one thing. This country has more than 1 billion people and 1 billion cultures. Yeah! And everything I did was only 1% of what India has to offer. With words, India is one of the most diverse, welcoming countries in the world. Without words, India is... That's 1 minute. बात करो अगर आज की वीडियो की तो वाकई बहुत मजा आया इनके व्लॉग देखने का, जिस तरह उन्होंने एडिटिंग की हुई है ना, और खासतौर पर अगर बात करें जैसे उनके 1-1 मिनट के या उससे भी कम के शॉर्ट से, वो देखने का बहुत मजा है। 1 मिनट में उन्होंने बहुत कुछ डिस्क्राइब कर दिया। बिल्कुल, मुझे नैस की वीडियोस की सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि बहुत पॉजिटिव है और हमेशा पॉजिटिव मैसेज देते हैं। इवन कि अभी जो वैसे हम लोगों ने आज की वीडियो देखी, उन्होंने एक ऐसी साइड भी दिखाई जहां पर बहुत ज्यादा आपको हैपनिंग लाइफ लगती है, फिर उसके बाद उन्होंने वो चीज भी दिखाई कि नहीं, प्रॉब्लम्स भी हैं। अदरवाइज हम लोग यूजुअली देखें तो वीडियोस में लोग जो उनसे हैं वो यही दिखाते हैं, या तो दिखा देंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, या फिर दिखा देंगे मतलब एक साइड दिखाएंगे कि अच्छी चीज क्या है, लेकिन वो दोनों साइड दिखाते हैं। और नैस की जो गर्लफ्रेंड है वो प्योर वेजिटेरियन है, और इसलिए उन्होंने जो बीच में कहा है कि जो वेजिटेरियन है उनके लिए जो है इंडिया हेवन है। बिल्कुल। और मजे की चीज पता है क्या है कि ये दोनों मतलब ही इज पैलेस्टीनियन एंड शी इज इजरायली। इसीलिए वो जो है उन्होंने बीच में शादी वाला कॉन्फ्लिक्ट भी जिक्र किया। सही। लेकिन फिर भी वो दोनों साथ में हैं। इन लोगों ने अपने पेरेंट्स को मनाया किसी भी तरीके से जो भी, लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है इनकी वीडियोस देखे कि बहुत ही ज्यादा आपको मोटिवेट करती हैं। इनकी वीडियोस बहुत ही पॉजिटिव है और वाकई में 1 मिनट में वो आपको इतना कुछ दिखा देते हैं ना कि आपका दिल करता है और देखो एनर्जी। और वैसे भी ना मुझे इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं कि जो ब्लॉग्स जल्दी बना देते हैं और आपको काफी सारी चीजें दिखा देते हैं एक ही सेकंड में या एक ही क्लिप में। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो है जो वाराणसी वाली अगर बात करें तो वहाँ पे एक चीज जो है इस वीडियो में काफी डिफरेंट जो है वो देखने को मिली। जो साधु थे एक जो है उन्होंने जो है वो ह्यूमन बोन्स जो है लटकाई हुई थी और वो ह्यूमन क्रॉप्स खाते हैं। ये मुझे जो है काफी ज्यादा डिफरेंट बीच में चीज लगी। हाँ, वैसे मुझे भी नहीं पता। हाँ, मुझे इस चीज का पता नहीं था। ये मालूम था कि जो अस्थियां हैं वो गंगा में बहाई जाती हैं और जो अंतिम संस्कार किया जाता है वो भी जो है गंगा किनारे किया जाता है, लेकिन ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा नई थी। और आप हमें ये बताइएगा कि क्या वाकई में ये सही है या नहीं है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्टडी पर। वाकई में जितना मतलब पढ़ाई वहाँ पर इंडिया में की जाती है और इंजीनियरिंग वगैरह, और कल मैं एक वीडियो देख रही थी और मैंने मौजम के साथ शेयर की। वैसे वो थोड़ी सी अलग इसलिए थी कि उसमें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट वो बता रहे थे कि मतलब उनके जो अभी क्लासमेट्स हैं वो उनको मैसेज वगैरह नहीं करते, ना ही वो कॉल करते, वो काफी अकेला महसूस करते हैं। बट ये है कि भाई इतनी ज्यादा पढ़ाई आप लोग ही कर सकते हैं, मेरे से तो कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, जिस तरह से इंजीनियर्स हम देख लें, डॉक्टर्स देख लें या नई इनोवेशंस हमें इंडिया से नजर आती हैं बहुत कम जगह। और अगर बात करें IIT की तो IIT जो है वो हमारे से आपको मालूम है कि वहाँ पे एडमिशन लेना जो है कितना मुश्किल है और लोगों का जो है ख्वाब होता है IIT में जो है एडमिशन लेना। अगर IIT की एडमिशन रेट जो है उसकी बात की तो 0.07 यानी कि 1 बिलियन लोग जो हैं, सॉरी 1 बिलियन कह रहा हूँ, 1 मिलियन लोग जो हैं वो वहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं। तो फिर कहीं जाके कुछ लोगों को जो है वहाँ पे एडमिशन मिलता है। और हर साल कितने इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं? 1.5 मिलियन, 15 लाख लोग जो है। और इसके बाद मैं बात करूंगी स्लम की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने स्लम की जो बात की ना उसमें उन्होंने इतनी प्रोडक्टिव चीज निकाली कि वहां पर हर बंदा काम कर रहा है और ये बहुत ही पॉजिटिव साइड उन्होंने दिखाई है। और जिस तरीके से मतलब छोटे छोटे घरों में और जिस तरीके से वो कंट्री की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है स्लम, तो मेरा हाल में मतलब जिस तरीके से पहले दिखाते थे कि स्लम
लोग रहते हैं, उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती। और बाद में हम लोग को पता चला भाई कि स्लम खरीदना भी कितना मुश्किल है। एक स्लम 25-25 लाख। वही मैं बात करने लगा हूँ कि अगर हम मूवीज देखें ना, तो मूवीज में बेसिकली स्लम्स को क्या दिखाया जाता है, गैंगस्टर्स का अड्डा, जो शराबी चरसी वहां पे रहता है, ठीक है ना, मूवीज में हमें यहाँ तक बताया जाता है। लेकिन अगर बात करें ऑन द अदर हैंड, तो नेशनल ज्योग्राफी की मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उसमें जो है उन्होंने बताया था, आज से काफी साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि 25 लाख रुपए की एक जो है छोटी सी झोंपड़ी स्लम जो है, एक छोटा सा घर जो है वो आपको मिलेगा वहां पे, एक कमरे का, वॉशरूम नहीं है। हाँ, मतलब पूरी वो जो बस्ती होती है उसमें एक ही वॉशरूम होता है। और मतलब नो डाउट बहुत मुश्किल आता है। लेकिन मुझे अच्छी चीज ये लगती है कि लोग इतने ज्यादा पॉजिटिव है वहां पर कि कोई भी फारिग नहीं बैठता इतनी मुश्किल के बावजूद। और सीरियसली 25 लाख रुपए में स्लम उस टाइम होती है। और अभी के टाइम में तो पता नहीं ये कितनी महंगी होगी। बिल्कुल सही बात है। वैसे हम यहाँ पे कभी बात करते हैं, हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, घर खरीदना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब वही मैं बात करूँ, जब हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो ये तो बहुत ज्यादा महंगी है। और अगर बात करें तो 65 मिलियन जो है वो जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों रुपया जो है वो ये स्लम जो है इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर रही है। और मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, जैसे बीच में उन्होंने एक बैग दिखाया था। मोस्टली क्या होता है कि आप बैग लेते हैं ना, उस पे टैग जो है वो या तो गुची का लगा होता है या अरमानी का लगा होता है या किसी और बहुत ही हाई स्टैंडर्ड ब्रांड का लगा होता है, लेकिन उस पे उन्होंने धारवी, ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। बिल्कुल मैंने ये चीज नोटिस की थी। और साथ में इसीलिए मैंने बोला कि उन्होंने देखो जैसे वीडियो में बोला कि मुझे कोई ऐसा नजर ही नहीं आया इंसान जो काम ना करता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आप अपनी कंट्री के लिए कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हर स्लम में आपको नजर आ रही है, हर घर में नजर आ रही है। इसमें नो डाउट जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जिन्होंने जो है पॉलिसीज बनाई होंगी, जब भी बनाई होंगी पॉलिसीज बनाई होंगी लोगों को जो छोटे छोटे कारोबारों को प्रमोट करने के लिए, तो ये भी बहुत बड़ा किरदार रहा है उस गवर्नमेंट का जिसने पॉलिसीज बनाई। वेल हम लोग इससे रिलेटेड भी कोई वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट है देखने में। और इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाजत। आपको वीडियोस कैसी लगती हैं इनकी, आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ वीडियोस करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।